मु चित्तरंजन बैरिसाल मु गोराचंद पट्टनायक मेमोरियल ट्रस्ट जड़े ट्रस्टी ता सहित ट्रेजरर आमर आज 10th माने 10तम गोराचंद पट्टनायक मेमोरियल लॉ लेक्चर होची प्रति वर्ष आम गोटे गोटे लॉ लेक्चर करूँ आम सार मेमोरी रे गोराचंद पट्टनायक मेमोरी रे तो आज करुचु ए विषय अच्छी जे लिविंग द कॉन्स्टिट्यूशन माने कॉन्स्टिट्यूशन को बंचिबा तार मुख्य उद्देश्य हला जे आमे दैनंदिन जीवन रे आमे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िबा दरकार नहीं किसी करवा दरकार नहीं और गोटे अपाठुआ लोक मध्य कॉन्स्टिट्यूशन को दैनंदिन जीवन रे बंची पारिबे सेटा किपरि भाव में बंचुचे आम अजाणत आम कॉन्स्टिट्यूशन को किपरि भाव में कार्य लगौचे सेटा को वर्तमान आमर आज न्यायाधीश श्रीजुक्त शशिकांत मिश्र कहते ये टॉपिक उपरे जे गोटे साधारण नागरिक हिसाब से गोटे लोक कॉन्स्टिट्यूशन को बंची पारिबो अर्थ आमे जमती आमर अधिकार सब्यस्त करुचे आमे सेमती आमर ओब्लिगेशंस जो अच्छी अन्य प्रति कर्तव्य अच्छी से समस्त कर्तव्य को मध्य आमे पालन करबा दरकार आमे इनफैक्ट दैनंदिन जीवन में पालन करुचु आमर इतिहास रे आमर संस्कृति आम परंपरा रे से समस्त जिनस भरी रही जहाँ कि परवर्ती समय आमर जितेबाला संविधान तैयारी हैला सेही संविधान रे सब गुड़िक रखागला किंतु ता माने नुह जे आमर दैनंदिन जीवन एटा हो नथला एटा ही कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी वैल्यूज बहुत थिला जोटा कि परवर्ती समय लिपिबद्ध केवल है से लिविंग द कॉन्स्टिट्यूशन गोटे साधारण लोक केमती बंची पार तारी पर से कहते निजर आचार निजर व्यवहार अन्य प्रति दृष्टिभंगी ए सबू जिनस को समाज प्रति दृष्टिभंगी निजर कर्तव्य ये समस्त जिनस को धरी आम लिविंग द कॉन्स्टिट्यूशन आम प्रकृति बंची आम भुवनेश्वर कोर्टर सारा ओडिशा रे आईन व्यवसाय जो भाव से निजक दर्शिकी निष्ठा भाव में प्रतिपादित कर शिक्षा करने निश्चित भाव जरूरी से आमर जो गोटे ट्रस्ट गठन कराई प्राक्तन जूनियर्स एवं अधुना जो माने थिले पाखे बंची पर्यंत से माने एक ट्रस्ट गठन करथिले एवं ट्रस्ट रे तांकर जो भली आदर्श थिला इभली भावे ता समाज रे प्रतिपादित करि परिबे नूतन आईनजीवी माने एह निमंते ए ट्रस्ट बराबर कार्य करि आसुछि ट्रस्ट स्वास्थ्य सेवा कारण सी फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन रो आजीवन सदस्य थिले द्वितीय कथा आमर लॉ लेक्चरर जोट्रे विभिन्न प्रकार कार्यक्रम रे एजुकेट करा होची लीगल एड एमते अनेक समाज सेवा कार्यक्रम रे ट्रस्ट करि आसुछि 2004 मसिया ठारो मु सुभाषिष पट्टनायक गोराचंद पट्टनायक मेमोरियल ट्रस्ट मैनेजिंग ट्रस्टी गोराचंद पट्टनायक मेमोरियल ट्रस्ट फॉर्म होता फ्रॉम जूनियर मानक मध्य गोराचंद पट्टनायक जने विशिष्ट आईनजीवी थे भुवनेश्वर देहांत पर जूनियर जो सब थे से फॉर्म कर ट्रस्ट को एवं ये ट्रस्ट ऑब्जेक्टिव हूँ प्रति वर्ष गोटे लॉ लेक्चर ऑर्गेनाइज करने से लॉ लेक्चर माध्यम विभिन्न सब्जेक्ट उपर लोक को एवं पर्टिकुलर लॉयर्स मान को जुडिशियल ऑफिसर्स मान को स्टूडेंट्स मान को प्रोफेसर मान को इनलाइटेन करचु ऑन सर्टेन टॉपिक्स आमे विभिन्न टॉपिक ऊपर करी दिस इज द 10th लॉ लेक्चर एटा 10म आज जो टॉपिक हूँ लिविंग द कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि आमर ओडिशा हाईकोर्ट रो जज श्री शशिकांत मिश्र जस्टिस शशिकांत मिश्र आसिक दौरान टॉपिक ऊपर लॉ लेक्चर जोटा कि आपण मैंने देखिपारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऊपर लेउछथि जोटा कि लिविंग द कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट होछि लिविंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 रु आछि एवं सब आमर देशर सिटीजन मानक पे छिड़ा होइछि एवं आपण माने आपण देखिपारे एइथि आपण राम लॉ लेक्चर जे आपण रिसोर्स पर्सन से के सुंदर भाव में जिनसटा कहिबे आपण माने को आपण आशीर्वाद पर धन्यवाद The constitution is this. This is the book. And somebody said it is the supreme law. Fine. It's the mother of all laws. Any other law that is enacted must conform to the constitutional principles, or otherwise they are liable to be struck down as otherwise the constitution or unconstitutional. So it is the supreme law. Now what is the constitution? I need not dwell upon it. How many articles are there? How many clauses are there? How many schedules are there? They are all available in the book. Any student can acquaint himself or herself with it. The question is, why the constitution? Why should we have a constitution? As Mr. Dwivedi has pointed out so eloquently, that we had the best of the minds of this country working for nearly 3 years
I mean, if you have seen the Freedom at Midnight rather, series in Sony Live, I'm so sorry. That series name is Samvidhan. It's available in the website. I think I will urge the young members of the bar. Why young? All members of the bar should see it. How each and every single clause was debated. They have made a dramatic reenactment of the meetings that the subcommittees that were formed for enacting the constitution of the Constituent Assembly. You will all agree that the constitution has shaped the course of our nation. Let us go back in time to 1947. To understand why we need a constitution, we must understand what was the situation of India in 1947 and on the eve of independence. India, comprised of several states. We were culturally maybe one, but politically we were different. So again, the serial which I was referring to, Freedom at Midnight, it's based on a book, best-selling book by Dominic Lapierre and Larry Collins. The series is available in 2 seasons of the Sony Live. I've watched it. You will find what sterling efforts were taken by Sardar Patel to unify more than 550 princely states. That became India. So what was culturally one now became politically one. Otherwise we would have had 550 different countries, small countries. Just imagine. And once we did that, once we brought everybody under one common umbrella, we needed one common law. We needed uniformity. We needed one law to govern the length and breadth of this great nation. That is why we enacted this great document called the Constitution of India. So that now we are one political entity having one law which is administered everywhere. Whether it is Kashmir or whether it is Kanyakumari, whether it is Arunachal Pradesh or whether it is Gujarat, wherever you go, the law remains the same. You may have hundreds of local laws. Even then, the constitution reigns supreme. So, we needed this to unify our country. Now, having said this, let us very briefly try to understand what is meant by living the constitution. As I said, first we must know what is the constitution. Then we will try to know what is meant by living the constitution. If we look at this is a book. This is an inert object without life. We are living beings. We live. This book doesn't live. If we look at it like that. Boyta kono machi? Ame machi. But I will say, yes, this book is alive. Book is certainly alive. It breathes. It speaks. It influences our lives. How can I say such a thing? Sounds absurd to the ears. You see, if behind these words used in this document, underneath these words, there is a principle. And if we, in our daily life, in our day-to-day conduct, in our institutional functioning, if we can reflect those values, those principles, then we will be living the Constitution. This is known as living the Constitution. So, and he also, Mr. Dwivedi, very briefly talked about, referred to Acharana and Uchchara. Constitution विषय रे हमें सारा वर्ग का भाषण दे पाओ. But let us ask ourselves. I ask myself, am I really living the Constitution? Giving a speech is all right. Delivering a judgment is all right. Delivering a law lecture is also all right. But am I living the Constitution? Because I am also a child of this Constitution, like anybody else in this country. So, again, let us
We will go to that topic a little later. How to do it? We must again go back in time. I am a lover of history, so I always tend to go back. Because you can understand, ଗୋଟେ ଗଛର ଫଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ତାର ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମଞ୍ଜି ଯେମିତି ଫଳ ସେମିତି। So in this country, our country has a recorded history of about 5,000 years old. Let us say 5,000 years. 2,500 years ago, the Kalinga War was fought. ତା ଆହୁରି 2,000 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଯିବା, the Vedic age. So there is some amount of recorded history. We know a little bit of it. The British came and ruled over us